Today we have a nice session called as Mind Your Maps, or you can also say Mind Maps. Okay, so let's begin. Okay, so किसी ने सुना है क्या पहले इसके बारे में? Have any of you heard about mind maps? तो आज हम थोड़ा जान जाएंगे इसके बारे में, माइंड मैप्स क्या होते हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन. It's the session is based on a beautiful book by Mind Map Mastery. It's by Tony Buzan. Tony Buzan is also the father of mind maps. He basically created mind maps for the first time, and he did a lot of research. He is an accolade figure in terms of memory, mind maps, thinking, and so on. Okay, so he is a very powerful name in that industry. Let's begin. So, what are mind maps? Mind maps are nothing but a technique to think, or a technique to plan, or a technique to focus, or a technique to solve problems. It's a multifaceted technique. It's also been referred as Swiss knife for the brain by Tony Buzan himself. Tony Buzan said the mind map is nothing but it's not a one technique to solve one kind of a problem. मल्टीफेसेट्स है इसको, बहुत सारी चीजें आप माइंड मैप के साथ कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो आइडिया ऑफ बेसिकली नोट टेकिंग. इट्स ऑल्सो यूज फॉर आइडिया जनरेशन. सो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं माइंड मैप के. आज का सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन वील try to learn some of these things. So you can see this beautiful slide here. They are tools for getting started on anything. तो ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज में रुके हुए हैं, राइट? देयर इज अ प्रोजेक्ट वी नीड टू स्टार्ट. You join a new company, you joined a new project, you are learning a new skill, you are tackling a new project, and you don't know where to start. So it's also a very powerful tool to get you started. Why they will work, how to make them, we'll see in a while here. But let's understand what they are. They are used to, as I said, they are used for doing a lot of things like focusing, formulating actions, taking a decision, processing information, getting started, solving problems, idea generation, conflict resolution, planning a party, and a lot more. Okay. But why do I care? Or let's see why it is important for me or what's in it for us. Why do we need a mind map? No. So most of us know our brains are very, very complex and powerful machines. Without our brains working, we literally can't do anything. We can't eat, we can't walk, we can't talk. Even to conduct this session in a pleasurable manner where I can talk, you can listen, cooperate, feedback, provide your inputs. We all need our brains here, right? And it does pretty much everything without us thinking, literally. So brain does a lot of things. Most of them we are not even aware about, but then it does control everything. It does control all the actions, voluntary and involuntary, of the body. Okay, makes us basically life becomes possible with the help of brains. Now, why do brains come into picture? Because mind map is nothing but a tool for your brains. Okay, let's see some of the powerful reasons here why we need a mind map. Let's start with the bottom left here. Transforms your life by mastering this revolutionary thinking tool. Okay, primarily it's a thinking tool, and everything that you do with thinking, like decision making, like laying out a problem and seeing its pros and cons, then thinking about a topic deeply, doing deep contemplation, or any other kind of thinking. All those kinds of thinking, mind map can assist you. Then let's see the next on the left on the top. Process information, create ideas, strengthen your memory, and get the most out of your leisure time also. Most of all, improve the way you work. So it's not only a thinking tool, as I said, it's also an entertainment tool. It's very visual, and it gives, let's see the third one here, it gives your brain a workout. It is literally an exercise for your brain. Like you do exercise your body by lifting dumbbells or barbell or deadlifts or all those things when you go to the gym.
You build up your muscles. Similarly, brain is more like a muscle. It's very flexible. It's called neuroplasticity, that your brain adapts as you go through the experiences in life. Brain is not a fixed thing. Keeps developing. ऐसा नहीं है कि जितना हो गया 10 साल के थे ब्रेन अभी अभी और ऐसा लगता है हमें लिटरली बट इट कीप्स चेंजिंग. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू फॉर्म न्यू हैबिट्स. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू पिक न्यू स्किल्स अप. अगर फिक्स्ड होता तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते नया. Right? But day in, day out, we keep learning new things. We meet new friends, we remember new faces, we call up new numbers, we go to new places, we have new memories being formed. So brain is plastic, quite plastic. It keeps changing. It's flexible. So brain, when I said plastic or when I said flexible, it means it's also a muscle that you can build. So brain को कैसे exercise करोगे? So this is also a powerful tool to give your brain a workout. Brain gym. कैन कॉल इट. तो आप माइंड मैप्स जब बनाते हैं ना तो आपके ब्रेन को बहुत एक्सरसाइज मिलता है. कैसे मिलता है? विल सी. इट गिव्स यू, इट अनलेशेस द पावर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. तो देखो कितने सारे टर्म्स आ गए अभी तक की. By the time we have just begun, but I kept saying these so many terms in which mind map can be useful for. Creative thinking भी आ गया इसमें, ब्रेन वर्कआउट भी आ गया, एंटरटेनमेंट भी आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गया. तो ये सब हमारी क्यूरियोसिटी अभी इससे बढ़ रही है. अभी हम जानना चाहते हैं सब कि क्या है, मतलब ये ऐसा क्या टूल है. और इज इट वेरी डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट. इट्स वेरी सिंपल. विल सी. Then going following the clockwise order of these reasons, let's see, it's a new way of thinking. न्यू वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है? न्यू वे ऑफ थिंकिंग विद अ टूल. है ना. देखो एक होता है थिंकिंग, आप माइंड में सोचते बैठते हैं. आपका सर पे हाथ रख लिया, गाल पे हाथ रख के आइज बंद करके बैठे हैं, या रॉकिंग चेयर पे झूल रहे हैं, या झूले में बैठे हैं, या बाथटब में बैठे हैं, या गार्डन में बैठे हैं. तो हम सोचते रहते हैं आइज बंद है या खुली है. एक एक वो थिंकिंग होता है. ठीक है. एक दूसरा थिंकिंग होता है जो ज्यादातर हम देखते हैं रिवॉल्यूशनरीज, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो पेन पेपर लेके सोचते हैं. थिंक ऑन द पेपर. हमने किसी सेशन में सुना भी था. राइट ऑन पेपर, थिंक ऑन पेपर. थिंक ऑन पेपर का क्या मतलब होता है? आप डूडल करते हैं, नोट्स लेते हैं, लेफ्ट राइट ड्रॉ करके प्रोस कॉन्स लिखते हैं. है ना. कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं. तो राइटिंग बड़ा हेल्प करता है उसमें. आर्टिस्ट लोगों को भी, वो लोग भी डूडलिंग के फॉर्म में सोचते हैं. है ना. कुछ स्क्रिबल करते हैं. तो माइंड मैप इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग विद अ टूल, ऑब्वियसली. तो आप सिर्फ ब्लाइंडली नहीं सोच रहे हैं इसमें, आप एक टूल के साथ सोच रहे हैं. दैट गिव्स यू मोर पावर, गिव्स यू मोर एसोसिएशंस, जनरेट्स मोर आइडियाज. Going clockwise down further, the rightmost point here, how to build a memory palace. तो देखो ये कितनी अच्छी बात हो गई. पैलेस हम सबको पता है. किंग्स एंड क्वींस हैव पैलेसेस एंड कैसल्स, राइट. राजा रानी को महल होते हैं. तो महल क्या होता है हमें पता है. महल एक बड़ा सा राजा का घर होता है, राइट. देयर आर लॉट ऑफ halls, corridors, there are uh, gardens, है ना. There are fountains, there are yards, open yards and so on. तो मेमोरी का पैलेस कैसे बनता है? मेमोरी इज वेरी वेरी पावरफुल. मेमोरी इज इटसेल्फ अ डीप टॉपिक विच वी प्लान टू कवर सम टाइम. बट अंडरस्टैंड दिस मच कि ये आपको मेमोरी ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है ये टूल. आप मेमोरी का पूरा पैलेस बना सकते हैं. क्योंकि माइंड मैप में क्या होता है, आप जब माइंड मैप बना लेते हैं किसी चीज को, आप पूरी बुक को माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट द होल, लेट्स से मूवी. आपने एक मूवी देखा, उसको आप माइंड मैप बना सकते हैं. आपने एक बुक पढ़ी, आर्टिकल पढ़ा, उसका एक माइंड मैप बना सकते हैं. आपको कोई नया टॉपिक सीखना है, यू डोंट हैव अ रेफरेंस, आपके माइंड में जो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, दोज यू कैन जॉट इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप. वंस यू क्रिएट अ माइंड मैप आउट ऑफ देम, यू हैव अ मेमोरी पैलेस पर से. क्योंकि वो सारे के सारे थॉट्स एक दूसरे से लिंक्ड है इन अ माइंड मैप वे. And then you have a memory palace. Like you can look at the whole mind map picture. It's an art per se. It is also qualified as a separate art. जैसे एक पेंटिंग होती है, तो ऐसे हम माइंड मैप को भी एक आर्ट फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हैं. तो वो पूरा का पूरा माइंड मैप, इट हेल्प्स यू टू गिव proper placeholders to everything, so that you have your memory strengthened. You are able to remember things better, which are in the form of a mind map. ओके. तो कुछ चीजें देखो समझ में आ रही होंगी अभी, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी. I'll be go ahead. Okay. So let's go further. Your brain is a sleeping giant and mind mapping is here to wake it up.
brain, as I said, it's very, very powerful, and we hardly know or use most of it. Some of us use some of it. Most of us don't use any of it, or very less of it, to be put in a humorous way. The idea is it's a sleeping giant. है ना? बहुत पावरफुल शक्तियां हैं आपके ब्रेन के पास, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो स्लीपिंग मोड में है, जो खुलती नहीं है बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ अस थिंक दैट वी आर नॉट आर्टिस्ट। तो बहुत सारे क्रिएटिव पावर्स हैं जो सोए पड़े रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, राइट? तो दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर मेमोरी बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन। सम पीपल थिंक आई डोंट इमेजिन बेटर, मेरा इमेजिनेशन पावर नहीं है कुछ भी। आई कैनॉट विजुअलाइज, आई कैनॉट सी कलर्स प्रॉपरली, आई कैनॉट विजुअलाइज, आई कैनॉट इमेजिन, एंड सो ऑन। सो दोज आर ऑल्सो, वी फेस अ लॉट ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स ड्यू टू अवर थिंकिंग लिमिटेशंस। तो माइंड मैप क्या करता है ना, माइंड मैप आपके ब्रेन को जगाने के लिए है। इट्स अ टूल टू अवेकन योर ब्रेन फॉर अलाउइंग यू टू रिमेंबर बेटर। लेट्स सी, नोट टेकिंग वर्सेस माइंड मैपिंग। तो earlier I also related mind mapping with note taking also. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप वो पूरे के पूरे नोट्स माइंड मैप फॉर्म में ले सकते हैं। देखो, एक ट्रेडिशनल नोट टेकिंग होता है, हम सबको पता है, यहाँ पे फोटो नहीं है बट हमको पता है नोट टेकिंग क्या होता है। हम सबने स्कूल अटेंड किया है, कॉलेज अटेंड किया है, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग्स, हमें पता है, राइट? नोट टेकिंग कैसा रहता है, हम शॉर्ट में लिखते जाते हैं। तो एक बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं या पूरा पैराग्राफ, ऐसे जैसे लीनियर फॉर्म में हम लिखते हैं पेज पे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, है ना? एक कॉपी है, एक पेन है, आप लिख रहे हैं, तो वो नोट टेकिंग होता है, ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लू पेन से लिखते हैं, जो भी है, ठीक है। बट दैट इज लीनियर, दैट इज वेरी लिमिटेड form, that is very limited style of making your brain to putting your brain to work. Our brain does not think in terms of words. Our brain does not think in terms of linear flow of information. Our, as we'll soon see, brain is quite powerful and thinks visually. Brain is quite powerful, thinks in terms of associations. तो माइंड मैपिंग एक नोट टेकिंग का मेथड भी है, यू कैन से काइंड ऑफ वन ऑफ द वेरी पावरफुल ब्यूटिफुल way of note taking. Compared to linear note taking, mind mapping is a very interesting way to take notes and also remember them better and also generate some new ideas alongside. तो यहाँ पे देखो डिफरेंसेस दिए हुए हैं। नोट टेकिंग हम इसको पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा, एंड देन व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड वी कैन डिस्कस दैट। नोट टेकिंग इज लीनियर ऑन द टॉप हियर। नोट मेकिंग के फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे नॉर्मल नोट टेकिंग के। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब it's not colorful. You either use blue pen or you use black pen or you use red pen, whatever pen you use on a white paper or a ruled paper or a blank paper, but it's still monochrome. It's very limited colors, it's one color. सारे नोट्स ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, तो ब्रेन इज नॉट अवेकन टू कलर्स विद द हेल्प ऑफ दैट। हमें विजुअल कैसे अच्छा लगता है, पेंटिंग क्यों अच्छा लगता है हमें कंपेयर टू नोट्स? नोट्स देख के नींद आती है हमें और पिक्चर देख के हम जाग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द ब्रेन लव्स कलर्स। देन लेट्स सी अदर फीचर्स ऑफ नोट टेकिंग। वर्ड बेस्ड, वर्ड लिख रहे हैं ना आप नोट टेकिंग में, आप वर्ड्स लिख रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं, सेंटेंसेस लिख रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है वो लिख रहे हैं, बुक से लिख रहे हैं, इट्स ऑल वर्ड्स आफ्टर ऑल। देन इट्स लिस्टेड लॉजिक, मतलब लिस्ट्स में लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के ज्यादा तरीके नहीं है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट राइट आप डिवाइड करते हो, डिफरेंसेस लिखते हो या लिस्ट्स बनाते हो 1 2 3 4 या बुलेट्स और एंड सो ऑन। देन सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब होता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ए से डायरेक्टली डी नहीं आता है कभी भी आपके नोट्स में, इट्स सीक्वेंस, यू हैव टू फॉलो दैट ट्रेन ऑफ थॉट, है ना? तो समझो 10 बेनिफिट्स ऑफ नोट टेकिंग, आप नोट्स ले रहे हैं तो 1 2 3 4 आप ऐसे लिखने वाले हैं उसमें नोट टेकिंग, ठीक है? माइंड मैप में ऐसा नहीं है, विल सी, इट्स नॉट सीक्वेंशियल। देन इट्स रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव मतलब इट्स लिमिटेड टू व्हाट इट इज, जो चैप्टर है उसी के आप नोट्स ले रहे हैं, you don't have any more than that. You're not able to imagine better, you're not able to add ideas to it. Then it's disorganized. Why it's disorganized? Because even though points A and D might be related, you're not able to connect them in any way, है ना?
फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे बुक के आपको नोट्स लेने हैं, आपने 20-25 पेज नोट्स ले लिए एक बुक में से, एक 200 पेज की बुक है, and you took 20 pages of notes from that. So let's say chapter 1 and 7 are related in the book. Chapter 1, 7 and 15 are related. How will you connect them in the notes? आपके नोट्स तो 20 पेजेस में अगर आप डिवाइड करोगे पूरी बुक को समराइज, तो आपका एक फर्स्ट पेज पे समझो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं, फिफ्थ पेज पे 7 चैप्टर के नोट्स हैं, और 15th पेज पे आपकी नोटबुक में 15 चैप्टर के नोट्स हैं. तो देयर इज नो कनेक्शन. आपको वो उतने पन्ने पलट के उसको ढूंढना पड़ेगा. यू आर नॉट एबल टू सी देम टुगेदर. It's not one picture, it's not one coherence, it's disorganized. किसी को लगेगा notes are organized. No, they are not. They are disorganized because you don't have a way to connect information together. Now, contrary to all of these, let's see the powers of mind mapping. How it is much better note taking compared to the traditional method. Let's see the points here. I'll read them out and then we can talk about that. It's multifaceted. है ना? Multifaceted मतलब you have visual and words and lines and everything go together. You have colors also. Then point number 2 is that it's colorful. It's not monochrome. Then it's not only word based, it's words, symbols also, icons, pictures, doodles, and so on. So you can include all of this in mind maps. Then it's not listed logic, it's associated logic, association, power of association. It's not sequential, it's multidimensional. We'll see how. It's not restrictive, it's imaginative. It doesn't restrict you to the subject. Your brain takes a flight, grows wings when you draw a mind map, because there are endless possibilities. You end up generating new ideas than you formally started with. So in mind map, as you see, you just basically start with a central theme and with some other ideas, basic ideas. But then your brain takes flight and then innumerable new thoughts come to you. Then it's creative, obviously. It's not disorganized, it's quite organized and creative as well. Okay. So that's how traditional note taking is different from mind map. If you practice perfectly, your practice makes you perfect. A quote by Tony Buzan. He is the inventor of MindMaps. Let's now discover the incredible power of your brain and how mind maps help us. As I said, brain building the muscle. Okay. So what is a mind map? It's a tool. It's a multifaceted tool for doing a lot of things. It is also called as a Swiss knife for brain. Now, some other more points here. It basically allows for whole brain thinking. देखो whole brain thinking मतलब क्या हुआ? Quite a mouthful, right? हम लोग लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन तो सुनते हैं थोड़ा बहुत, है ना? तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बिल्कुल ऐसा कोई लेफ्ट इज फॉर लॉजिक, लेफ्ट इज फॉर वर्ड्स ऐसा हम सुनते हैं. राइट ब्रेन इज फॉर क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन इज फॉर spatial awareness and so on. Right is for colors, left is to words, right is to formlessness, left is for forms and shapes. तो इस तरह से ये दोनों ब्रेन का अपना अपना यूज है. राइट इज फॉर creativity, left is for basically logic, linear, sequence, maths, and so on. Right is for songs and poetry, left is for prose and books and essays and so on. तो ये अपने अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन में ना हेमिस्फेयर्स में, ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं ऊपर. ब्रेन इज लाइक डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. लेट्स से योर हॉल ऑफ द हाउस हैज वन पार्टीशन इन बिटवीन, और उसमें फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो ऐसे ही ब्रेन में ये पार्टीशन होता है एक बड़ा सा, जिसमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है. लेफ्ट ब्रेन एंड्स अप होल्डिंग ऑल दीज other inner parts to control these areas which I just mentioned. Mind map से क्या होता है ना, mind map will activate both of your brains at the same time. So you basically remember better, you develop your brain better, you get more ideas, and you stimulate more of your brain at the same time. It activates whole brain instead of just limiting. For example, जब हम अभी ट्रेडिशनल नोट टेकिंग के बारे में देख रहे थे, राइट? तो ट्रेडिशनल नोट टेकिंग जब आप करते हो ना, तो इट्स मोस्टली योर लेफ्ट ब्रेन वर्किंग हार्ड, because you are only thinking in terms of words. You are just writing words in a sequence, on a monochrome sequence. So there is no color involved, there is no ideas involved, there is no connectivity involved. तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है उस समय पे जब आप लिख रहे हैं, नोट टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है?
लेकिन जब आप माइंड मैप बना रहे हैं, माइंड मैप के फॉर्म में नोट्स ले रहे हैं, देन योर एंटायर ब्रेन इज वर्किंग टुगेदर in coherence. Your left brain and right brain both are activated because of the features of mind map itself. Let's see the points here now. अब मैं bottom left पे शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे. Some of these things we already discussed. Let's see in more detail. Left brain is for logic, numbers, sequence, analysis, words, and lists. Then above that, mind map activates whole brain thinking, engaging logical side and creative side. Logical side is the left brain side. Creative side is the right brain side. And on top, right corner, it's a multifunctional skill, can be applied to all cognitive functions such as memory, creativity, learning, and all forms of thinking. तो ये हमने अभी देखा था, right? Mind map is used for all of these things. And bottom right, right brain. The difference between left and right. Right brain is for spatial awareness, imagination, color, holistic awareness, awareness of the self, daydreaming, dimension. ठीक है, तो कुछ राइट ब्रेन के फंक्शंस हैं, कुछ लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस हैं. ये दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करता है माइंड मैप का जो टूल है. नाउ लेट्स सी, however we will see in much more detail maybe in part 2 how to draw a mind map, but let's say today you will get a lot of idea. तो देखो माइंड मैप में एसेंशियली क्या होता है, आपको कोई बहुत ज्यादा कोई टूल्स चाहिए, कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हालांकि सॉफ्टवेयर है इसके, देयर आर सॉफ्टवेयर also now. You can download a software and create a mind map in that. But you can also draw it on paper, and it's quite recommended to do it on paper because it activates your brain much better compared to doing in a tool. But doing in a tool is also okay. But what you need, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, colored pencils या colored pens या whatever you can write with, gel pens or anything will do, and you need a large sheet of paper. That's it. इतना ही चाहिए. तो उसमें कोई बहुत टूल्स लग रहे हैं ऐसा नहीं है. कोई भी शीट ले लिया आपने, A4 शीट ले लो, उसको लैंडस्केप मोड में रखो. देखो नोट टेकिंग में कैसा रहता है, हम पोर्ट्रेट मोड में लिखते हैं. पोर्ट्रेट मोड सबको पता है क्या, टॉप टू डाउन लिखते हैं, है ना. और उसी शीट को जब आप ऐसे 90 डिग्री से टर्न करते हो तो वो लैंडस्केप मोड हो जाता है. लैंडस्केप मोड इज लेफ्ट टू राइट, है ना. जैसे प्रिंटर में भी सेटिंग होता है A4, देन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. तो लैंडस्केप में आप उसको हॉरिजॉन्टली बिछाते हैं पेपर को, है ना. पोर्ट्रेट मोड में आप वर्टिकली रखते हैं पेपर. तो माइंड मैप पे आपको हॉरिजॉन्टली रखना है उसको, बिकॉज यू गेट मोर स्पेस टू ड्रॉ, यू हैव मोर स्पेस टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी. तो टूल्स ज्यादा नहीं लगते हैं. ऑल यू नीड इज अ शीट ऑफ पेपर एंड सम पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स और पेन्स, एंड on top of that you need a brain, you need an open mind or imagination, and a subject you wish to explore. Just a subject. आपको किस पे एक्सप्लोर करना है, we'll see. Now here we see the primary skeleton of a mind map. तो माइंड मैप में क्या होता है, एक सेंट्रली एक इमेज होती है. ठीक है, आपने कोई टॉपिक ले लिया, सॉन्ग राइटिंग, you took a topic, maths, you took a topic of some very specific, note taking or planning a party or a travel plan or a wedding plan or whatever. तो वो सेंट्रल इमेज हो गई आपकी. तो आपका जो सेंट्रल टॉपिक है, central image that captures the main subject. Why image? Because it starts activating your right brain also. तो आप सेंटर में क्या करते हैं, एक कोई भी बड़ा सा वर्ड आर्ट और एन इमेज और अ पिक्चर और अ डूडल आप सेंटर में उसको रखते हैं, जो भी आपका मेन टॉपिक है. इट्स लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री. ट्री होता है ना, तो उसको एक तना रहता है, बेस रहता है, एक मोटा सा तना रहता है उसको, मेन बॉडी, दैट इज द ट्रंक. और फिर उस ट्रंक में से क्या होते हैं, ब्रांचेस फ्लो आउट. हमने पेड़ देखे हैं, राइट. तो माइंड मैप इज लाइक अ ट्री फ्लैटेंड ऑन द पेपर, ऐसे समझो. तो आपके सेंटर में एक मेन इमेज है या मेन टॉपिक है, मेन आइडिया है, एंड देन यू हैव ब्रांचेस रेडिएटिंग आउट ऑफ इट. बस इतना ही है माइंड मैप. तो आप उसमें से देखो 4 प्राइमरी कलर्स यूज किए हैं. यू टिपिकली इट इज रिकमेंडेड टू गो 3 or 4 प्राइमरी कलर्स ओनली एंड 1 ब्रांच ईच कलर, एंड देन ब्रांचेस हैव सब ब्रांचेस in the same color. You can even do sizing accordingly. For example, main जो trunk है वो आपका मोटा है, सेंटर पे इमेज है,
फिर उसमें से जो फर्स्ट लेयर ऑफ ब्रांचेस निकल रहे हैं दैट हैज अ सर्टेन थिकनेस, लेट्स से 6 mm, और उसमें से फिर जो ब्रांचेस आ रहे हैं लेट्स से ईच इज 2 mm और समथिंग, टू गिव इट अ स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री, करेक्ट? एंड ईच ब्रांच हैज वन कीवर्ड ऑन इट। अभी हम जैसे जैसे एग्जांपल्स देखते जाएंगे ना, हमें समझ में आता जाएगा। तो जो कीवर्ड है इस पे ब्रांच पे, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड यू कीप इट इन एन इमेज और अ डूडल फॉर्म, और यू गिव दैट ब्रांच अ क्रिएटिव शेप बेस्ड ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो मेन टॉपिक, मेन जो आइडिया है बिहाइंड ड्राइंग अ माइंड मैप, दैट इज वेरी सिंपल। You have a central image, then you have branches radiating out of it, some 3 4 main branches, then each branch will have a sub branch, and each branch has one keyword written on top of it. It's not recommended to write a sentence, it is recommended to write one word to give your brain to do a chance to do more associations. अगर आप पूरा sentence लिखते हैं पूरा specific, then you are basically limiting yourself. You are not able to generate a lot of ideas. So only one keyword is recommended per branch. ठीक है, एंड इट फ्लोज आउट एंड आउट एंड आउट एंड आउट। कोई बोलेगा ये कितने लेवल तक जाने का, तो कितने लेवल तक भी जा सकते हो। देयर हैव बीन माइंड मैपिंग कॉम्पिटिशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे दे हैव अवॉर्डेड वर्ल्ड लेवल माइंड मैप्स। तो किसी आर्टिस्ट ने बहुत बड़े बड़े माइंड मैप्स बनाए हैं, लाइक समवन ड्रू अ माइंड मैप ऑफ लंदन, दैट बिग। तो उसमें कितने लेयर्स होंगे, उसमें 7 8 9 10 15 लेयर्स होंगे, लाइक ब्रांच के नीचे ब्रांच के नीचे ब्रांच के नीचे ब्रांच, ऐसा up to 10 layers. But for us, it's very simple. So you can just keep it up to 2 layers or 3 layers. As you become comfortable, you can draw more. You would obviously need a bigger sheet of paper also. अगर आपको 6 7 layers तक जाना है, you would need a chart paper. Then A4 paper won't do. तो अगर आप किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो चार्ट पेपर मिलते हैं बड़े बड़े, हम सबको पता है, A3 साइज, A2 साइज एंड ऑल। तो आप A2 A1 A3 के चार्ट पेपर ले आओ और उस पर पे बनाओगे तो आपको बहुत सारा स्पेस है वहाँ पर खेलने के लिए। You can actually draw a bigger mind map with more sub and sub branches. Okay, now each branch will have one key image or word, as you can see here also. तो ये एक्चुअल माइंड मैप का सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है, एक्चुअल भी हम एग्जांपल देखेंगे। ये देखो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब देखो बीच में क्या बनाया, देखो वहां से शुरू करते हैं। रिजोल्यूशन में उसने 2 फोटोज बनाए हैं, एक रेड में एक पर्सन खड़ा है और एक ग्रीन में एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, और रेड और ग्रीन वाले पर्सन के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है, they are not talking, you see, with the artist has drawn it very beautifully. So someone is crossed hand and someone is putting hand on the waist. तो उन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स और बात नहीं कर रहे हैं, या आपका किसी से झगड़ा हुआ है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का भी इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। एज आई सेड, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ माइंड मैप। इवन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए किसी ने बनाया माइंड मैप। So see the main branches here. Look at the icons, look at the colors, look at the styling, look at the images doodling. और ये देखो, ये इमेजेस कोई ऐसे नहीं है कि माइंड मैप में कि आपको लगता है कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं बना नहीं सकता। इट कुड बी लाइन इमेजेस, इट कुड बी वॉट एवर इट कुड बी वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, लेट्स सी द मेन ब्रांचेस हियर। इफेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या असर पड़ रहा है उनके लाइफ पे। देन डिफाइन, डिफाइन मीन्स कीवर्ड्स, कहाँ से आया कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द कीवर्ड्स। देन सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वांट्स, ठीक है, वांट्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देखो एक बंदे को कुछ चाहिए, दूसरे को, एक को ए चाहिए दूसरे को बी चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। लाइंस मैच नहीं हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हम बोलते हैं, ओपिनियन अलग अलग है। तो दोनों के वांट्स क्या है उसने कंबाइन करने की कोशिश की है एक एक ब्रांच में। देन नीड्स क्या क्या है एंड वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो इफेक्ट्स में देखोगे तो टीम है, फीलिंग्स है, अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, टीम में देखो डिवाइडेड है, लो मोरल है, इफेक्ट्स है ये कॉन्फ्लिक्ट के। सपोज दोनों एक ही कंपनी में मैनेजर हैं, ये दोनों बंदे जिनका कॉन्फ्लिक्ट है, तो टीम पे क्या इफेक्ट आएगा, टीम विल फील डिवाइडेड। ठीक है, देन देयर इज लो मोरल, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। देन फीलिंग्स में देखो बहुत सारी चीजें हैं, हर्ट है, फियर है एंड सो। देन सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशंस का देखो उसने डिजाइन कैसे किया है, लैडर की तरह, इट्स वेरी वेरी स्मार्ट, और लाइक अ टीम वर्क, मल्टीपल पीपल स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर। देन कोलैबोरेशन एंड प्लानिंग। तो कोलैबोरेशन में क्या होगा, कंसेंसस पे आना पड़ेगा दोनों को, रिजोल्यूशन के लिए काम करना पड़ेगा और कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आई एम रेडी, आई एम कमिटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देन प्लान, एक्शन, टाइम फ्रेम, स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये देखो नीट एंड नीट एंड नीट, यू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो कोलैबोरेशन में समझो कंसेंसस है,
कंसेंसस के अंदर भी मुझे और 2 ब्रांचेस बनाने हैं। कंसेंसस में जैसे लेट्स 2 पॉइंट्स, वन इज डिस्कस टुमारो एंड वन इज डिस्कस टुडे, आई एम जस्ट गिविंग लाइक दैट। तो वो दोनों ब्रांचेस उसके नीचे आ जाएंगे और कंसेंसस के नीचे 2 ब्रांच डालेंगे हम और वो लिखेंगे पॉइंट्स, ऐसा। ठीक है। देन वांट्स एंड नीड्स। नीड्स में देखो, एसेंशियल नीड्स is communication is essential between the two. Then clear, straightforwardness and honesty required. And another part is attention to details. क्योंकि क्या होता है, हम मिसअंडरस्टैंडिंग कब होता है, जब बिग पिक्चर नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है, वी डोंट नो फुल इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये देखो, द आइडिया इज टू नॉट लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हियर, द आइडिया इज टू स्टडी दिस माइंड मैप, हाउ द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन इट वेरी नाइसली विद द यूज ऑफ राइट आइकॉन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे समझ में आ गया। मे बी वील हैव मोर एग्जांपल्स, लेट्स सी।